हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्लास आईसी को निकालने का एक नया तरीका, जिसमें कि मैं असेंबली का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि आईसी निकालते वक्त उस आईसी के जस्ट पीछे वाले सेक्शन पे सीपीयू या एमएमसी वगैरह लगा हुआ है, उसको हीट होने की वजह से वो आईसी हमारी लूज़ ना हो जाए या कोई और प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैंने एक ये नया तरीका निकाला है, आप इसको ट्राई कर देख सकते हैं। इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, डिशोल्डिंग वायर को फोल्ड करके कट करूंगा और आईसी के साइज का बिल्कुल उसके ऊपर रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट और पीपीडी लगाकर आयरन से हीट करेंगे। देखिए, ये हमारी आईसी निकल चुकी है। बहुत ही इजी है। इसमें मेरी आयरन का जो टेम्परेचर है वो 350 है। मैंने ये आईफोन के मदरबोर्ड पे करके दिखाया है। मैं आपको आईफोन के मदरबोर्ड पे 3 बार इस स्टेप को करके दिखाऊंगा और 2 बार एंड्रॉयड पे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का रहता है कि सर आपने आईफोन के मदरबोर्ड पे दिखा दिया लेकिन एंड्रॉयड के मदरबोर्ड पे नहीं दिखाया है। तो आप लोग चलिए ट्रिक को देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पूरा देखा करिए जिससे कि आप लोगों को सहायता मिलेगी, ठीक है। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। Invincible.
sensible.